So, let's introduce ourselves. Yeah. Starting from here. Hello everyone, I'm Anjali Pandey and we currently in RML Lucknow and float का option choose किया तो let's see. Hello everyone, I am Yasasvi. Now I have been allotted NLU Odisha और मैंने भी float का option choose किया so yes. I am Arushi Medri and I am going into NLSI Bangalore. I am Dakshin and I am also going to NLSI. I'm Sambhav Jain and I'm going to NLU Delhi. Hi everyone, congratulations on your performance. I am Arjit Bansal and I will be going to NLU Delhi. Hi everyone, I am Pratap Singh and currently I have chosen the float option and right now I am in RG NUL Patiala. Hi everyone, I am Rishma Visht. I have been provisionally admitted to RGNUL and I am waiting for the rest of the list currently. Hi everyone, my name is Raghav Gupta and I have been allotted in NLU Jodhpur and I have logged myself. Hi everyone, I am Lakshita Bhardwaj and I am going to NLSI Bangalore. Okay. Great. So law कैसे choose किया? Like we can start from Lakshita. Yeah. Like it was clear कि medical भी नहीं करना, engineering भी नहीं करना. That's So it. basically, Argument ज़्यादा पसंद है मुझे. Examination. average law student reasoning. ये बहुत cliche तो मैंने सुना है हमेशा argument अच्छा करते हैं. मेरा 10 से डिसाइडेड था कि मुझे लॉ ही करना है क्योंकि मेरा एक कजिन है तो मेरे को उसको देख के बहुत इंस्पायर होता था तो मैं कहा लेट्स गिव इट अ शॉट सो I think from my childhood I've known I have to do law. My dad is in the court, he works out of court. So he used to bring those files home और मैं छोटी थी तब से बैठ के पढ़ती थी तो धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो जो मेरे घर का environment था I thought I was always sculpted into this person जिसकी skills एक law environment में बहुत suit करेगी. मैंने लॉ को चूज करा था क्योंकि मेरे चाचा लॉयर थे इसलिए मेरे को उनसे मोटिवेशन मिली थी एज अ लॉयर लॉ को चूज करने के एज अ करियर. So law wasn't my first priority. I was initially preparing for NEET, which was my plan. But when that did not work out, I talked to my brother and my mother, and we decided together that my brother has already cleared CLAT and he's in RML NLU Lucknow right now. So he advised me that this is something that I can do, and on his advice and guidance, I decided to do law, and thankfully, gratefully, it went well. So now we'll see where that takes us. Definitely. So for me, it's like I was interested in civil services and judiciary, and my father is also a lawyer. So all like from 8th onwards, I was inclined towards law. That this is a dynamic career, I can pursue different things in this. So yeah, that made law the best option. So yeah, has turned out to be a family business now. So I have chosen law because law gives us the authority to argue. And I love speaking. Many people know that here. So I needed some authority to speak. नहीं तो लोग सुनते नहीं हैं. I want to get paid for what I love doing. Yeah. So basically that's why I've chosen law. I think it's for me the power and the money that comes with law. The honest answer. But my dad has done PhD in law and I have always been around the environment जहाँ घर पे law की बात होती रहती है. So it was also one of the reasons I'm pursuing law. But हाँ पैसा sure. So how often do you break laws? बाद में बता दो. Off cam. To be honest, everyone wanted to say the same thing. हम दोनों settle हो रहे थे. Exactly same as Lakshita. I was really bad in maths and science, so अभी option ही बचा तो घर भी बोला कि law अच्छा option प्रेफर कर देता हूँ and of course पैसा. इनका भी अच्छा कर है. So I was also like मैंने career options देखना start किया था 11th class में तो I realized कि okay this is something of my interest and मेरे दादू was also a public prosecutor. मेरे उनके बच्चों ने नहीं follow किया था वो मैंने follow किया. I like to add कि मैंने सूट्स पहले देख ली थी. I was waiting for this. मैंने सूट्स पहले देख ली थी तो मैं तो ऐसे inclined हो गया था कि next हार्वी स्पेक्टर. Okay सोच रखा है कि किसी ने क्या करना चाहते आगे का लाइफ. हाँ. मैंने सोचा था पहले कि मैं जुडिशरी करूँगा, जुडिशरी में ट्राई करूँगा. बट अभी जब मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बेटर डिसाइड कर पाऊंगा जब मैं कॉलेज जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उधर इंटरेक्ट करूंगा, एक्सपीरियंसेस सुनूंगा सबके. तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं. Open minded. ओपन माइंड.
open-minded अभी कोई तो decide नहीं है. I'm more inclined towards white collar crimes, tax law, but still open-minded, very open-minded. मेरा भी यूपीएससी का ही है, बाकी कोई ओपन माइंडेड बात चीज है. Seems very open-minded. काफी लेवल है. So as I've learned that what we already planned हर बार work कर नहीं पाता, so I'm obviously keeping an open mind. Of course, I have a little bit of an inclination towards government exams, which is one of the reasons why I chose NLU Delhi. But again, if I like corporate or maybe litigation more, then maybe I go that way. So it's open-minded. So it's the same for me. Like I'm inclined towards civil services and judiciary. Plus, I'm also into litigation. So I'll decide in college which me better. Yeah, I mean, let's see how the life goes, how it takes me, and just enjoy it. I am inclined towards corporate law, but I'm For money. The past and the money. but yeah, I'm looking forward to explore more options. And on very high. Initially, I was also inclined towards corporate for obvious reasons. But now I'm very open-minded. Who knows what comes next. Seems we shifted our convo to a lot of money here. Yeah, open-minded. थोड़ा सा judiciary का है because of my roots. But let's see. No one's chosen the road not taken. Law is already a road not taken in India. तो corporate versus judiciary वाला जो रहता है बच्चों थोड़ा सा कि litigation में तो बहुत ऐसा 10-12 साल लग जाते हैं बूढ़े होके फिर जा रहे हो And corporate में पैसा मिलता है. Actually, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, ठीक है, बहुत सारे लॉयर से बात करी है, पुलिस जजेस से बात करी है. तो ऐसा है कि जब कॉर्पोरेट लॉ वर्सेस लिटिगेशन आता है ना, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होता है. जो लिटिगेशन होता है उसमें यू वोंट गेट अर्ली सक्सेस. इट्स अ वेरी ग्रेजुअल सक्सेस, नो, तो इट टेक्स टाइम. बट जब तुम एक बार एस्टैब्लिश होते हो लिटिगेशन में, देयर इज नो वे, देयर इज नो कमिंग बैक. तुम बहुत ज्यादा कमाते हो लिटिगेशन में, हद से ज्यादा. तुम जो मर्जी बोलोगे उतना पैसा तुम्हारा. बट अदरवाइज कॉर्पोरेट कंपनी में जाओ, तुमको तुम्हारी ग्रोथ थोड़ी फिक्स हो जाती है या फिर बहुत धीरे धीरे ग्रोथ. I think immediate results मिलते हैं. But you can't upgrade बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो उसकी बेनिफिट्स नहीं है. I've also heard कि corporate में ना life नहीं रह जाती. लाइफ वर्क बैलेंस It's not नहीं like है. वही यार वही. Corporate है ट्रैकिंग इकोसिस्टम है. आपको सारी शिक्षा स्टार्टिंग में मिल जाता है, उसके बाद वो स्टैग्नेट हो जाती है. And even after doing so good, you are under someone who's not even as qualified as जो you. ग्रो हंगर होता है ना, वो ग्रो करने का, वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है. But then if we talk about government exams, साथ में like we talk about judiciary, then again that is a conversation to be had. जहाँ पे it's about the respect, the power, the role you play in society versus the money that you're making. So of course these options like UPSC and judiciary are not the best options if you just want to be rich. But if you want to contribute to society, you want that respect in society, then obviously these are the best options for you. Some fixed life with making a Like difference. job working for the nation भी तो it's a thing of pride as well. That is No, I used to look judiciary as a job security, to be honest. Yeah, so it is for sure. The respect and job security, money also. You know, The perks. perks basically. Yeah. पैसा गाड़ी महंगा घर Like judiciary में social life भी नहीं रहती ना इतनी. आप इतना socialize नहीं हो पाते हो. I disagree with this क्योंकि judges के पास मतलब restrictions होता है because the way you have to behave in public. ethical Like restrictions. you have to be neutral, right? Yeah. But I think restrictions हर part of job में आते ही हैं. Yeah, obviously, in a corporate environment, there are certain rules and regulations that you need to follow. And when If do you are a litigation, you have litigation. restrictions on your time. And maybe the life gets boring as well. Daily 9 to 6, 9 to 6. And I it's mean, to not be honest, there are very few restrictions on. Yeah, they Yeah. keep you. Like 9 to 6 is the official one. Yeah. That is only in government मतलब jobs. judiciary you got a lot of workload. Like you're not free. Even if you're free, you're not free. Law as a field, में that is something which is happening a lot, where the workload is a lot. Judiciary, में there is After insane that, workload. mind रहेगा while you're sleeping, while you're going to bed, you're like, "Hello, please," like that. But I think we all are doing the things we love the most though. Yeah. But That is argument. ऐसे ये notion है ना society में कि you have to be a topper, and यहाँ पे I think सब लोग इसलिए they have done something in life and CLAT निकाला है. It's not an easy paper, तो top आप लोग हमेशा से toppers थे. Like I wasn't a topper, पढ़ाकू थी मैं, पर मैं topper वाली बच्ची नहीं थी. तो what about you guys?
प्रिंसिपल के पास भी गए हो बहुत of course for practice और मैं स्कूल पहुंच जिस वजह क्योंकि पापा का ट्रांसफर टू जॉब्स था और हर स्कूल में बदनामी है किसी सो हाँ लेकिन अप्रूव के साथ थोड़ा मैच्योरिटी आती है वो अभी भी नहीं आई है बोलने के लिए से बट एनएलयू में वाइस चांसलर के पास नहीं गए क्या तो क्या किया? क्या किया पहले ही महीने में अगर वार्डन से डांट नहीं खाई तो क्या करना वो पहले दिन अबे इसको कट कर देना अरे नहीं वो ग्रुप है ना अरे मुझे हाँ तो yeah I was definitely not good at academically और yeah but लेकिन CLAT किया तो अंदर से फीलिंग आई कि नहीं हुआ कुछ करना है लाइफ में खुद को प्रूव करना है और जो बोलते पेरेंट्स वैसा और बस दे दिया सो या अगर एकेडमिकली गुड नहीं हो तो भी दे सकते हैं You did amazing. I was an above average student, but CLAT और स्कूल की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है मतलब CLAT का एप्टीट्यूड और स्किल बेस्ड होता है और स्कूल वाले रटना पड़ता है so बस बट हाँ निकाल हो जाता है सब हाँ मतलब even I wasn't also like I said topper वाला बच्चा in the school. I was above average. एंड स्कूल में तो बहुत सारी चीजें की है ऐसे से प्रिंसिपल के राउंड्स वो भी करते हैं स्कूल बंक करके कोचिंग आया हूँ वो भी बहुत बार किया है बट या आई वाजंट एंड CLAT तो कर सकते हो बिकॉज़ इफ यू लव इट स्कूल तो इज फन I have always been a topper. शर्मा जी का बेटा हाँ तो अब पता नहीं स्टार्टिंग से क्या था बट हाँ लाइक 90% प्लस रहता था हमेशा एंड एक CLAT में फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तब उस टाइम थोड़ा लगा था नहीं जो स्कूल वाला मॉडल है वो यहाँ वर्क नहीं करता है यहाँ पर आपको लाइक मैंने ट्राई करा था 1-2 महीने में निकल जाए बट नहीं आप एप्टीट्यूड कुछ करने में टाइम लगता है तो लाइक वही चीज़ है इसके साथ में काफी ज्यादा अच्छा कर दिया So I've also always been inclined towards academic curriculum. So school में I was more or less in the top with the 90% plus वगैरह. And of course I took PCB and prepared for NEET. So there was that. But of course in the NEET preparation also I learned that school का success जो है that doesn't translate into competitive exams and उसमें भी obviously there are a lot of factors which come into play. Then in CLAT particularly, as someone said, this is an aptitude-based paper जो हमें build करना पड़ता है. It teaches you a lot of skills other than just memorization. So that is something that does not translate from school to the paper. So school में आप कैसा कर रहे थे that does not really matter. If you're willing to work hard, if you put your life and soul into it, then you can definitely do it. I was always a topper, 95 plus रहता था मैं हमेशा ग्लैड से क्लियर होगा स्कूल स्टडीज इतनी मैटर नहीं करेगी आगे वही जो रटने का होता है और बाकी प्रिंसिपल ऑफिस में मेरा भी होता था आना जाना But I दूसरे रीजन से जाता था ऑफ कैमरा बताएंगे अरे ब्लूपर्स डालते हैं ना इसमें लास्ट में ये जो हो रहा है ये ब्लूपर ही है No, I was never that good at first. I was never studious at all. Like I always thought school में जो भी पढ़ना होता है it's to get by. You have to score to get by. कि ठीक है आपके 79% आ रहा है, 75 आ रहे हैं, 80% आ रहा है, it's fine, it's enough. You never have to compete with anyone else when it's in school. You just have to do your enough. कि मैंने इतना कर लिया, that's enough. But when I remember when it was our boot camp, LE boot camp, I got so scared because whenever I was in school. And there was this much crowd. I never felt scared कि भाई मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को ही पास होना है मेरे को इन सबसे क्या बट यहाँ पे जब मैंने वो देखा क्राउड देखा मैंने बच्चे देखे मेरे को सिर्फ अपना बेस्ट नहीं करना है मेरे को इन सबसे भी अच्छा करना पड़ेगा if I want to get somewhere and that was very scary because everyone was so good everyone was doing their best everyone was putting in their work everyone was studying for hours and hours and doing everything that they could. I mean, it was very scary, but I mean, I genuinely believe that a lot of luck was in my side. I did work hard, definitely. I got 12 out of 12 in maths. I don't care किसी को भी कितना है पर मेरे maths में 12 out of 12 आए. And I was very, very proud of that because I worked super hard for maths. But I did see you working hard throughout classes, so you definitely deserve where you are today, if not even more. in class, I used to sit in the first bench, I used to sit in the second, I'd open my mirror and I'd start looking. To be honest, I've been that kind of backbencher जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था. I used to roam around school bunk classes.
दिन भर बैडमिंटन खेलता रहता था, कुछ नहीं रहता था। मतलब 10th में मेरी 80% आई थी यार, कोविड के टाइम पे, तो समझ पा रहा हूँ मैं कितना कम पढ़ा। पर वही है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद तुमको चीजें हिट करती कि नहीं अब थोड़ा कुछ करना है, तो हाँ मतलब वही करा। फिर बस जब वो हिट किया ना, तो वो बहुत ही गंदा हिट किया था, तो तब से फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर And the results have showed. I have always been a topper. मतलब मुझे 6 से पता था कि पढ़ाई के अलावा मैं कहीं भी नहीं जा सकती। ना स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई के अलावा। एंड आर्ग्यूमेंट Obviously. नहीं, वो तो सबके पेरेंट्स यही होता है। अभी से तो वकील हो मतलब गया। इसका gist ही है कि doesn't matter. हाँ मतलब कुछ भी कर लो, CLAT is different, school is different. Yeah, like if you want to, you're lazy. But CLAT is definitely more intimidating when you हाँ compare it मतलब with आप school. हमेशा स्कूल में पढ़ते थे लाइफ अपनी 17 साल Any competitive exam is more intimidating. and the not just first CLAT. time you're preparing for it is scary. And life matters उसके बाद। Exactly. स्कूल के एग्जाम में नहीं बिकॉज matters। स्कूल में यू ऑलवेज फील यार इतने भी परसेंटेज आ गए क्या फर्क पड़ेगा। वो ठीक है No, तो actually, average marks आ गए, ठीक है, nobody sometimes scored people for that. take school के exams also seriously. Like नहीं, I did take them seriously, और but उस it's पे like लाइफ मैटर नहीं करती आपकी। no, people are ऐसे कि नहीं भाई 12th में तो आ गया, मैं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, but that is because the mindset from earlier is prevalent, in which 12th के marks Exactly. से we used to get into colleges as well. Now there are competitive exams for due as well. You need to clear CUET. So Yeah. at this point, the relevance of the 12th boards marks is going down. Of course, कुछ courses अभी भी लेते हैं इन सबको, foreign universities take this into account, MBA takes it into account, but still the culture is shifting towards competitive exams more, and we are realizing कि school में जो पढ़ा या रटा, that does not define who you are as a person, and actually your caliber can shine anywhere at any time. I think इसकी वजह से 11th 12th से ही बच्चे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो मतलब those who cracked it along with 12th आप लोग क्या recommend करोगे मतलब सभी 12th या 11th में वो कैसे मैनेज करेंगे? I think 12th के अंदर obviously burden रहता है with whatever subject you have, क्योंकि the studies deep ऐसा नहीं होता, तो पढ़ना काफी होता है, but it's about prioritizing कब क्या करना है, दोनों चीजें करनी होती है। It's not like कि आप बोर्ड्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हो, it's not also a good thing, but initially आप CLAT को थोड़ा slow ले सकते हो and focus on the boards, and then बीच में take it 50-50, and then आखिरी के 4-5 महीने should only be CLAT। आप चाहे ब्रेक लो बट डोंट फोकस ऑन स्कूल, क्योंकि देन जो हमारा क्लैट दिसंबर में हो जाता है तो उसके बाद वी हैव टाइम, तो वो आप कर लोगे इफ यू स्टडीड थोड़ा पहले से। तो आई थिंक उसको उस तरीके से बैलेंस करेंगे तो डूइंग इट इवन विद द स्कूल इजंट समथिंग जो I think it would be better if you just tell each one subjects and how did you deal with them first. सो आई तो हैड साइंस मैथ्स, तो व्हिच मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट, बट वैसे ही जैसे व्हाट आई डिवाइस्ड अभी, तो इनिशियली आई स्टडीड थोड़ा थोड़ा, बीच में और कम, एंड देन अभी आफ्टर क्लैट 10-15 दिन पार्टी एंड उसके बाद वापस लग जाओ, बहुत इजी होता है। इट्स नॉट उतना नहीं तो PYQs कर जाना ऐसा हो जाता है। Example questions, PYQs. बस बोर्ड्स कैसे जा रहे हैं? अभी तक तो एक मेरा तो एक ही हुआ है इंग्लिश का। बोर्ड्स अच्छे जा रहे हैं Who all over here is prepared. एंड वो तो अच्छा ही कहना पड़ता है। खराब नहीं कह सकते। हाँ पेपर अच्छा जाता है, रिजल्ट का पता नहीं। एंड ये तो पेरेंट्स भी देखेंगे तो अभी नहीं बोलना। ये ऑफ कैमरा बात है। What is your advice to students who are at their own course? बोर्ड मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी एज अ सब्जेक्ट, तो फिर मेरे को इतना कभी इशू नहीं रहा। वही जो दक्षिण में कहा था, स्टार्टिंग में एकदम स्कूल ओरिएंटेड, फिर बीच 50-50 एंड एंड में आफ्टर क्लैट स्कूल ओरिएंटेड हो गया वापस से। मैंने काइंड ऑफ बीच में स्कूल ओरिएंटेड हुआ था मैं बहुत ज्यादा, तो सिर्फ क्लैट के बॉक्स में असर हुआ था, पर एंड में ऑल गोज वेल वाली बात थी। अब तो वही चल रहे बोर्ड्स वगैरह, तो पेपर अच्छे जा रहे, रिजल्ट तो बाद में देख लेंगे। तो मतलब जस्ट फॉर ड्रॉपर्स हाँ मतलब ड्रॉपर्स वगैरह के लिए भी इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, मतलब एक साल बाद लाइक थिंकिंग की पूरे लाइफ उस पे बेस करना है या टेकिंग दिस बिग स्टेप, तो हाउ हैव यू डन इट? वी गॉट मेनी ऑफ यू, तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर अंजलि, हाउ डिड यू गो आई अबाउट? थिंक मैंने जब क्लैट सो मैं लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जो था क्लैट का लास्ट ईयर, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक टेरिबल। मैं देख के डर गई थी क्योंकि आई वाज एन ऑनलाइन स्टूडेंट, तो मेरे पापा ने तो बाहर आते ही मेरी शक्ल देख के उनको समझ आ गया था आई वाज लाइक मेरा पापा तो उन्होंने बोल दिया he didn't even ask my school date, he didn't ask कैसा गया, he तो just hugged me and he was like कोई बात नहीं बेटा क्या हो गया एक और दे देंगे
तो आई थिंक मेरे थोड़ा बैक ऑफ द माइंड भी था बिकॉज मेरे को पहले ही पता था कि मैं इतनी प्रिपेयर नहीं हूँ तो मे बी आई विल टेक इट ड्रॉप. इट वाज डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड डिसीजन क्योंकि मेरी मम्मा वाज वेरी लाइक पार्शियल ड्रॉप लो, फुल ड्रॉप में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एक साल में बाद हो जाएगा. बट आई थिंक दैट वाज थोड़ा सा मोर लीनिंग टुवर्ड्स a full drop because law का passion था. ये वो क्लैट मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट एक्चुअली, एंड इससे पहले भी 1 ईयर प्रिपेयर करके किया था. कोचिंग सेंटर का नाम नहीं बता रहा मैं कैंपस में. करियर काउंसलर. But I think since you joined Delhi, you cracked it. करियर डॉक्टर वाले केस करने वाले थे Yeah. हाँ तो लाइक मैं बड़े कॉन्फिडेंस से गया था पहले क्लैट के सेंटर पे, लेकिन अंदर से पता था कि हाँ पढ़ाई नहीं की है. और देने के बाद पता चल भी गया, मेरे भी पापा को देख के समझ में आ गया कि हाँ नहीं हुआ इसका. तो लाइक बहुत बड़ा डिसीजन था पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे किड्स पे. और ये लगा था कि अगर इस बार भी नहीं हुआ फिर नेक्स्ट दूंगा, नेक्स्ट भी नहीं हुआ तो साइकिल चलता जाएगा. बट वही खुद पे बिलीव करना होता है, और पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट भी किया. मैं कहूँगा स्टार्टिंग में बुरा लगता है जब वो डांटते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो ही आपके सबसे है, उनसे बात करो, शुभचिंतक है आपके. और हाँ तो टीचर्स, पेरेंट्स इन सबसे बात करो, हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा का प्रॉपर होते हैं. Then you also took a drop. So लास्ट ईयर माय रैंक वाज अराउंड 3300. तो एंड मतलब लास्ट ईयर मेरा स्कूल का बोर्डिंग भी मेरे पे ज्यादा था, तो मुझे पता था कि एक बार ड्रॉप लेने से और अगर मैं मेरा बेस्ट दूंगी तो हो जाएगा. सो था कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस. और मेरे पास कॉमर्स थी तो सेकंड ऑप्शन जो था वो था सीए, और सीए मुझे करना नहीं था. तो कुछ ना कुछ करके लॉ तो निकालना ही था. तो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एट द वेरी एंड पता होता है कि आपका हो जाएगा. सो आई थिंक So even it was my second attempt in CLAT this year. So like last year, the mistake that I made was that I didn't give enough marks. I only gave 10 marks like last year. So the thing was that I panicked during the paper, and I was able to solve all the questions at home, but I wasn't able to do it there. So the thing, I got 1300 all India rank last year. So it was a really tough decision for me. Like, should I join some college? Should I join RU? Should I take a drop? And then my parents advised me like कि फाइनल अटेम्प्ट तो सेकंड अटेम्प्ट ही था जो 2024 दिया था, 2023 ट्रायल के दिया था मैंने. तो लाइक फिर ये था कि चलो एक साल और ट्राई करते हैं. so was there this temptation as well कि यार partial drop ले लेते हैं? हाँ बीच में था, बट लाइक फिर ये था कि मेरा शायद पूरा फोकस वहाँ चला जाए, शायद मैं यहाँ पर फोकस लेवल ना कर पाऊँ. It was a really big decision क्योंकि negativity starts creeping in. It always happens. तो ये भी रहता है कि यार अगले साल कुछ भी हो जाए, even if I don't get this, 1300 is very respectable. It's very nice rank. तो but you wanted higher चीजें, तो but ये रहता है कि यार अगले साल ये भी नहीं मिला, तो how to conquer that phase and mindset वो वाला. Just have faith in yourself. Like even I lost track for preparation for the first few months. बट फिर बाद में समझ आया कि नहीं यार अब करना है, ड्रॉप लिया है, रिस्क है, हुआ अगर हो गया तो बेस्ट आउटकम है, नहीं हुआ तो बेस्ट आउटकम है. So risk है तो इश्क है. रिस्क है. But you did amazing. It worked out. दोनों क्रैक कर दिया. Yeah, you did Guys, CLAT very well. So I have a unique story in which I am a dropper, but it was my first attempt in CLAT. So both of those things happened at the same time. So my journey was that I gave NEET first 3 times, and each time I almost cracked it, and every time I thought कि इस बार नहीं हुआ, maybe I'll be able to do it next time. इस बार नहीं हुआ, maybe I'll be able to do it next time because थोड़ा थोड़ा रह रहा है. So again, I mean the journey towards taking a drop remains the same. That we have our hopes and dreams, and we're thinking कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. And वही self confidence धीरे धीरे it gets shattered, it gets lower कि यार अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ. As I said, I was always good at studies and I always enjoyed studies, so I thought कि यार कर लूँगा, this is something that I can do. But after my last attempt in NEET, which was in May last year, मतलब 2022 में, 2023 में, last year, yeah, sorry. So in 2023 in May, मेरा NEET का attempt दिया मैंने, and I realized कि यार when it did not go well again, I realized कि this is high time now. I need to stop dreaming of that and I need to do something of my life with my life. So यार
रहता है हमेशा कि अपनी लाइफ में we are wasting years, some people are getting ahead, but we need to understand that there are no fixed checkposts in life कि इस साल इतनी उम्र में ये हो जाना चाहिए, इतनी उम्र में ये हो जाना चाहिए. Regardless of what society tries to tell you, at the end of the day, it is your own life and you carve your own path for yourself. So of course, my brother was there to guide me through it, and he directed me towards CLAT, where I did well. So if you're not doing well in one thing, that does not mean that you are a failure or that you won't be able to do well anywhere else. So keep your mind open, and if you believe in yourself, if you have supportive family, which I did, they helped me a lot when I did not have confidence in myself. At that time, definitely the drop won't matter once you've achieved something, the amount of years won't matter when you've achieved something. At the end, where you've reached, that's what matters. और अभी अगर 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं, but you're reaching a good place, then that's all that matters. अगर कहीं और जाके तुम्हें लग रहा है 5 साल के कोर्स करने के बाद you need to struggle, तो वो struggle अगर हमने यहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया, that does not detract from who you are as a person. So I definitely feel कि prop doesn't take away from you. Even the experience of NEET really helped you, I guess, in some way. Yeah. Because Because mentally it also like you became strong, ना कि so basically NEET कुछ 20 लाख बच्चे देते हैं round off करके. कंपटीशन का डर नहीं लगा. So I was very used to NEET वाला environment, which is much more cutthroat, and the pressure is there. And given that I had taken props for it, the pressure was even more on me. So when I shifted from NEET to CLAT, I realized कि यार यहाँ पे it is much more relaxed, which I enjoyed a lot. And of course, the number of students, obviously, it was very difficult as well, and I respect everyone who has cleared it. But at the same time, the pressure was a little less on me this time, and I enjoyed this journey. जो NEET है उसमें it's like more of rote memorization, बार-बार same चीज पढ़ के याद करना. not much about aptitude. Yeah, but in CLAT, it is an aptitude building. We are learning current affairs, which makes us feel connected with the world. So that is something which is an enjoyable part of this journey. And of course, my experience with NEET taught me how to be disciplined, did not make me afraid of competition. And of course, I had long study hours ki aadat, so that definitely helped me. So no matter what you do, these habits that you build in this competition, they're going to help you in your life no matter where you go. So it's not the outcome that is the result, it's the journey. It's the things that you learn in the journey that If you go by the process, so things will happen. Definitely. I actually am a dropper, but this was also my first attempt. मेरे साथ क्या हुआ था कि I didn't know what to do in 12th. मेरे को कोई idea नहीं था how to approach which college is good. Do I really should do law? Is it worth it? 5 years? I mean, 5 years is a long time. 5 years changes a lot, and I also wanted to go abroad. Like I was very conflicted in my mind कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, and I had no one to guide me. Like I don't have any elder brother or sister, and like not even parents. Like they were very supportive, but they couldn't guide me as such. You know, they were very supportive that you do whatever you want to do. We'll be there, but they could not guide me कि नहीं ऐसे करो, नहीं वैसे करो, नहीं ये करो. So I was very alone in that process, and I didn't know कि मैं क्या करूँ. So I just gave boards. I was like मैं एक बार board देती हूँ, मैं फिर सोचूंगी, फिर मेरे boards तो दूँ मैं. तो फिर मैंने उसके बाद दिया, and then I gave CVT, but I couldn't do that well in CVT. It was very mediocre. I was like कि अब मैं क्या कर सकती हूँ? Like what should I do now? Like I've missed CLAT last year, and I think around May end week I came here. I was like I should prepare for CLAT. तब मेरे को लगा था कि if I talk to someone, maybe a counselor, then I'll get some real advice. I'll get a ground reality कि भाई क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. So I came here, I talked to Shivam sir, he told me ऐसे होता है, and then I went home and I thought about it, and I joined in June. I think I started classes in June. But then also I could not study as well, because when I started, I couldn't grasp कि भाई CLAT होता क्या है, क्या मतलब क्या पढ़ना होता है. It was, the syllabus was very vague कि सभी है, कुछ भी आ सकता है. So to me, even forming a line and outline कि भाई क्या borderline क्या मैं कर सकती हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत tough था. Plus, I think I didn't even take CLAT that seriously. In the beginning months, I thought अरे हो जाएगा. And उसके बाद I think I had a death in my family, तो मैं उसके भी मेरे 2-3 महीने छूट गए. Then I started missing classes. He knows that I never used to come to class. I used to do online because I couldn't muster the energy. All that happened to me in this year. I was very like कि भाई I'm defeated at this point. I started taking CLAT seriously October में, और तब मुझे बेटा कि अरे मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा. I have to do something. So I'll always regret the time I wasted. I did take
Okay, so I started getting serious in October. तब मुझे लगा कि नो मेरे को सच में कुछ करना पड़ेगा. This is getting serious and definitely मेरा first attempt था तो I was very nervous कि कैसा होगा क्या जाएगा. इससे पहले जो mocks दिए थे एली में तो mocks का environment काफी ऐसे रिलैक्सेबल होता है कि आप दे सकते हो, आपको इतना वो फील नहीं होता रूम के अंदर बैठ के. But definitely when I gave CLAT, I was very nervous and बहुत अजीब सा फील As in, it was थोड़ा intimidating. Very intimidating, definitely. Yeah, so we would also like to move from You so tell. already or just मेरा एक्सपीरियंस काफी अलग था. मैंने 12th में दिया था, मतलब 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एंड उससे मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. लाइक आई गेव माय बेस्ट. इनफैक्ट इससे भी अच्छा गया था टू बी ऑनेस्ट. मेरे को अंदर से आता था मेरे को कि हाँ मैं निकाल लूंगा. बट मैं मॉक्स के स्कोर को बहुत दिल पे लगा था उस टाइम पे कि भाई ये से इस मॉक के अंदर मेरी 40 रैंक आ गई, मेरे से तो नहीं होगा, टॉप में बैंगलोर नहीं निकलेगा. या फिर किसी मॉक में भाई ऐसे अच्छी सिंगल मतलब कुछ अच्छी रैंक आ जाए तो ऐसे कि मेरे से बेटर कोई नहीं है. तो ऐसे बहुत चलता था मेरे साथ में. तो जस्ट क्लैट से पहले ना मेरा बहुत खराब चला गया था, बहुत खराब. मतलब आई डोंट इवन इमेजिन इतना खराब. तो आई स्टार्टेड डाउटिंग माय एबिलिटीज. जस्ट क्लैट से एक रात पहले मैं सो नहीं पाया था बिल्कुल भी. मैं 4 घंटे की नींद लेके क्लैट देने गया था. तो फिर उधर बच्चों को दिखा दे और वेरी कॉन्फिडेंट है सब. तो फिर उस थोड़ा पैनिक करा मेरा पैनिक कर गया. मतलब मैं उधर पेपर दे रहे थे और OMR में मेस कर दिया मैंने. तो 10-11 क्वेश्चन ऐसे एक साथ ही गलत भर दिया मैंने. मतलब एक क्वेश्चन मिस कर दिया तो वो सारा स्ट्रीक बन जाता है. एंड करा भी CR में जो उस टाइम में इजी आया था. तो आई मिस्ड अपॉन द चांस टू क्वालिफाई फॉर द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस. सो बट ठीक है. फिर मैंने सोचा कि आई विल टेक अ ड्रॉप. पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बोर्ड्स दिया. बट उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई करने का. आई वाज डन भाई. मतलब इतना सारा मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ मैं पहले ऐसा नहीं था. मैं पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, ऐसा था. तो उस फेज के बाद में इस फेज में आना इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो फिर आई गेव माय सेल्फ ब्रेक 2 to 3 months. मैंने उस टाइम पे अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर किया, मूवीज देखी, वेब सीरीज देखी. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस ये जो क्लैट 2024 उसके लिए सीरियसली सिंस अगस्त से स्टार्ट किया. उसके बीच में मुझे बहुत अलग से हो रहा था कि यार नहीं छोड़ दूं क्या यार, बिजनेस में चल जाता हूँ पापा के बढ़िया होना. तो हाँ मतलब फिर उसके बाद मैं अच्छे से प्रिपेयर किया वापस से और फिर हो गया. काफी अच्छा. To be honest, a break thing is necessary though. Actually it's necessary. हाँ, You got to give yourself time. Sometimes we lose track of the things. So like, मतलब ये डर था उस ब्रेक के बाद जब मैंने वापस स्टार्ट किया था कि will I be able to catch up with the people जो जनवरी से कर रहे हैं, जो बहुत पहले से कर रहे हैं. इतना ज्यादा जीके, इतना सारा वो कहाँ से लाऊंगा वो सब कुछ जो मैंने पिछले साल किया था. बट इवेंचुअली ना वो चीजें आ जाती है. बट टाइम अगर ड्रॉप लेते टाइम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सीप्स इन ड्यू टू द इनसिक्योरिटीज एज वेल कि you've really invested the whole year in something. तो what if it turns out like the previous one जिन्होंने 2 attempt दिए हैं. Exactly. मैं इस बार क्लैट से पहले एक मॉक खराब हुआ था, जस्ट खराब हुआ था. बट इस टाइम मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था अपनी प्रिपरेशन को लेके. तो इस बार मतलब भगवान की कृपा से नहीं. But it happens with you that पहले भी जो हुआ था वही तो अभी भी हो रहा है. पहले भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, अभी भी मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ. What is different this time? एंड इवन मॉक्स में भी अगर कोई ऐसी गलती हो जाएगी OMR गलत भर दी तो भी यू फील कि यार मैं यहाँ कर रहा हूँ, D-Day भी तो मैं कर सकता हूँ. डिफरेंस इस बार ये था कि अप्रोच को लेके थी. मतलब ठीक है यार, मतलब ट्रस्ट करना अपने आप पे कि मैंने मेहनत करी है, मुझे रिजल्ट मिलेगा. Exactly, mentality. So I feel that is very important because काफी बार हम जैसे आपने बोला that last year you were associating mock score with a lot of your self confidence. That is something that we should not do because अगर हमारी preparation अच्छी चल रही है, then 1 or 2 mocks अगर खराब जा रहे हैं, that does not define कि हमारी overall preparation कैसी है. A lot of time mocks are just tools to gauge कि हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, and then we can analyze them and work on those issues properly. और कभी-कभी it's not your day and sometimes mock can go bad because of that. For instance मेरे साथ personally CLAT से पहले जो last few mocks थे उनमें it would happen कि एक अच्छा जा रहा है, एक बुरा जा रहा है, एक अच्छा जा रहा है, एक बुरा जा रहा है. So at that time I did not lose confidence in myself कि यार एक मॉक खराब जा रहा है बीच-बीच में, तो मतलब ऐसे मेरी preparation कम है क्या? I knew that preparation I have worked hard and hopefully it will translate into the paper as well. बस ये था कि I did look out this pattern और फिर मैंने कहा था पेपर से एक दिन पहले वाला जो मॉक होगा वो खराब करके ही जाना है ताकि वापस पेपर अच्छा जा सके. मतलब लोगों को समझना चाहिए कि आजकल से भी है कि तुम्हारा स्कोर हमेशा बढ़ेगा ही.
मतलब वो ग्राफ हमेशा बहुत हाँ, नीचे ग्राफ नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा. We What want matters is success. how you trust your preparation. Yeah, trust in the process. अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका for XYZ reasons नहीं हुआ होगा CLAT में and बहुत depressed होंगे मतलब तो what would you advise? I think the number of droppers we have who've done exceptionally well now speaks the volume itself. Like आप भी कर सकते हो यार, ये देखो. Even if you did great this year, you gave your best, कुछ reasons की वजह से नहीं हुआ, luck का भी एक factor हो जाता है. But I feel एक बार try करना whatever you feel like हो जाएगा and at the very end everything works out. And even if it doesn't work out, it's just an exam. It doesn't define what your life's gonna be. So just go with the flow, believe in yourself, and just give your best. And I think remain positive is the most important message. Be optimistic, things will happen, and life will take you where you are जैसे destined बोले to थे be. एनालियूज ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क लॉ यही से बनना है. बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस और कितने सारे अच्छे लॉयर्स को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जो कि नहीं पढ़ाए उसे लेकिन फिर भी इतने अच्छे कर रहे हैं अपनी लाइफ में. So basically, these competitive exams don't define कि am I a good person, am I a bad person, am I a success or am I a failure? Because at the end of the day, it is just an entrance. You are entering a world. एक college में जा रहे हो and that college में भी आप क्या करोगे with those 5 years that is going to also shape you. And there are a lot of factors which go into these competitive exams. कभी luck है, कभी health में कुछ हुआ, कभी family में कोई issue आया. So all that keeps on happening. तो उसके basis में हम एक दिन में ये नहीं define कर सकते कि एक ही दिन में decide कर लिया कि हमारा future कैसा होने वाला है. There are other colleges जहाँ पे if you work hard for 5 years you will do amazing in life. As you said, there are amazing lawyers. Actually, in fact, हमारे top के lawyers अभी भी जो हैं they are not from NLUs because NLUs are relatively new. So even if it does not work out, you need to keep that belief in yourself and keep on working hard because be like a person जो college में जाके college को define करे कि ये college का मैं student नहीं हूँ, मैं हूँ जिसका ये college है. Yeah, exactly. So that is something कि NLUs में जाके ऐसा नहीं कि यार NLU से ये बच्चा है, still मैं हूँ जो इस NLU पे जा रहा हूँ, मैं हूँ जो किसी भी college पे contribution दे रहा हूँ. And as far as your life goes, as I've experienced, maybe if something does not work out, that is not the be all end all of your journey. ऐसा नहीं है कि मेरे को अब यही करना है जब तक निकलता नहीं. There are endless paths in life which you can choose. Maybe हम किसी गलत side field में भी हो सकते हैं. Maybe something else is meant for us. It's just that if we keep that belief in ourselves, if we keep pushing forward, regardless of in which direction, we will find success somewhere. We will find what is meant for us. I'd like to add a disclaimer because I've been at this situation. So मैं भी ऐसा ही हो गया था उस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में कि यार मम्मा सब खत्म हो गया कराएंगे ऐसे. तो मेरी मम्मा ने मुझे एक बात बोली कि अभी तो लाइफ शुरू भी नहीं हुई है. जिसके तुम सपने देख रहे हो वो लाइफ तुम्हारी शुरू भी नहीं हुई है. तो अभी रो मत और एक वापस एक ट्राई दो, एक चांस दो. ठीक है, अपने आप को एक और. यू डिजर्व अ चांस. तो वही है कि यू डोंट हैव टू थिंक कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा. नहीं, मतलब अभी कितनी उम्र है अपनी, 17-18 साल है. We should give us It's just the beginning. Exactly. Life is just getting started. So Exactly. basically, don't take life very seriously. You are 18. Life. So be it. It is just Life as well. मतलब नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा seriously नहीं एक लेना life चाहिए से life. We are 18, so we should be 18. Failures are just learning points. You have to step on them and then move forward. Yeah, life is not ending here. फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से जितना भी इससे पहले पे अटेम्प्ट किया था वहां से कुछ लर्न नहीं किया है. मैं Exactly. बहुत कुछ लर्न किया था मैंने. और मैं तो सजेस्ट करूंगा जो मैंने करा तुम लोग भी वही करो. थोड़ा चिल करो. Actually, मतलब even I started in Exactly. April because वो energy नहीं होती आप. एनर्जी नहीं, But मतलब you failure should be में happy तब बड़ा कि failure तुमने मिलेगा. ट्राई करा एटलीस्ट. यू डिड योर बेस्ट. नहीं हुआ तो ठीक है. जस्ट ट्रीट योरसेल्फ ना. जो तुम क्लैट Give yourself some time. जो तुम क्लैट के बाद सिलेक्शन के बाद करते हो तुम अभी भी करो. I'd rather suggest this. Your mentality and mental health plays a very important role, which is not talked about enough. बोलते हैं बस पढ़ाई करते रहो बिना कुछ सोचे. But at the same time, if your brain is not functioning properly, if you're not okay mentally or like you don't feel okay, तो हम अपनी journey अच्छे गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम उस journey को enjoy नहीं कर रहे. So that is very important that you take time off, you give yourself time to relax. And in CLAT and LegalEdge particularly, it is a very open-minded paper. We are reading passages, उससे हम निकाल रहे हैं, कुछ derive कर रहे हैं. So we need a fresh mind जिससे हम कुछ new information take in करें और लिख सकें उसके बेसिस पर. और आज के एज में लाइक बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं. एक मॉक के बेसिस पे they start judging कि he is doing better than me, she is doing better than me. I think comparing and all, it's a way like Yes. a menace. वो आपकी अलग से एंजाइटी देती है कंपेयर करना. And it doesn't help in any way. ऐसा कुछ नहीं Never है कि does. इसके बारे में सोच के anything good is gonna happen to you. I think best thing is mentors या friends से open up होना.
मतलब जाके बस रो दो उनके सामने You should have someone जिसके साथ में आप सच्ची में जाके रो सको. because वो अपना जितना अंदर रहता है ना that एक It's टाइम को come फाइट out. करते हैं मतलब होपफुली रोने की जरूरत नहीं पड़ रही But even if it happens, तो everything pours out. But you need have to have someone जिसको आप ये कर सको. You should have a person कि आप जिससे सब कुछ बता सको. Even आपके अगर marks में कम number आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, even if you are happy, you should share it with someone. And if you don't have any person, mentors बैठे हैं. And also make the best of whatever resources you have. Whichever college you go to, doesn't matter if it's a top NLU, low NLU, non-NLU, private college, doesn't matter. ऐसा तो नहीं है कि कोई NLS और NLU चला जाए और वहाँ पे बस बैठा रहे टाइम पास करे तो उसको अपॉर्चुनिटी उसके पास उड़ के आएंगी नहीं तुम आओ तुमको इतने पैसे देंगे ऐसा किसी के साथ नहीं होता है. It doesn't matter if you do your best, you connect with people, you go out, you work for yourself, you work for your name, then your college name will not drag you down. Like it doesn't matter if you're a good person, if you're doing good at your job, then no one will see your college tag. And I think your college will get better with the tag. तो मतलब सोशल मीडिया का क्या सीन था मतलब बहुत लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मैं कहना चाहूँगा जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ना तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोशल मीडिया के साथ कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता हूँ और मैं क्लैट के 3 तक इंस्टाग्राम में एक्चुअली चला रहा था. बट सेकंड अटेम्प्ट में रियलाइज हुआ नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मेरे दिमाग में चलता है, भले मैं नहीं देखता लेकिन मेरे माइंड में वो मीम्स आ रहे हैं. मीम्स का बहुत मुझे मीम्स बहुत पसंद है और जब भी मॉक भी देते समय गाने बजते मीम्स आते रहते तो प्रॉब्लम है. तो मैंने सोशल मीडिया को इंस्टाग्राम को ऑफ कर दिया था, डिसएक्टिवेट कर दिया था. तो आप पे डिपेंड करता है अगर आप डिस्ट्रैक्शंस झेल सकते हो वो उसको जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं कर सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है. I think it's very subjective. हाँ मतलब साथ में भी कोई कर सकता है कोई कर भी सकता है. I think not only social media, there are n number of more distractions which we can be distracted by, but it depends on person to person. If you're really oriented towards something, तो distract up नहीं होते फिर. मतलब आप 10 मिनट distract हो गए, तो but there will be healthy distractions जो आपको better ही करेंगे. नहीं तो distract नहीं होते हो. नहीं, but it happens with some people. Like I was oriented, but like होता ये था कि जब भी मैं मोबाइल स्टार्ट करता था and when the notifications used to pop up, I just used to like scroll Time का for पता 20 नहीं minutes or चलता. something. You never know कि कितना होगा. हाँ, so then it's better. So what I used to do is I just used to switch off my phone and just give it to my mom. Best thing. मैं तो इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम था. मैं देखता था जो ट्रेंडिंग वीडियो होती थी. I used to get hooked up उसी पे कि हाँ वाह ओके ठीक है. करंट अफेयर्स रिवाइज हो रहा है. But eventually realize होता है कि नहीं you're spending a lot of time. तो what I should do was कि मम्मा को जैसे आपने कहा मैं मम्मी को फोन किया करता था. मम्मा फोन रख लो मेरे से तो नहीं हो पाएगा. I still don't have an Instagram account or any social media. So don't Snapchat try है, वो भी getting सिर्फ in contact. फोटोज के लिए Snapchat कोई और कुछ नहीं होता उसमें भी. But फोन तो यूज रहता ही था. मतलब मैं फोन स्विच ऑफ करके मम्मी को नहीं दे सकती. मुझे फोन चाहिए मेरे साइड में. मुझे चाहिए. मैं बार-बार टाइम देखती हूँ. मैं इतने टाइम पढ़ी, मैं इतने टाइम पढ़ी. मुझे फोन चाहिए मेरे साइड में. हाथ में घड़ी आपने अभी भी पहन रखी है. नहीं फोन में देखो. फोन तो कुछ चाहिए हर हालत में. I think जितने भी points we've spoken, one common thing has been parents. Parents always. I think parents have played a very very big role behind the scenes. They are the best role models, best motivators, best everything, best mentors. They've Best engraved our friends. journeys. That we could not be here without them. Definitely. Someone said to me once Literally. कि दुनिया में तुम्हारे साथ कोई भी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा साथ रहेंगे. And it's very true. It is the parents what make what we are right now. It's because of them. It's like जो पेपर हम लिख रहे हैं वो सिर्फ हम अकेले नहीं लिख रहे होते हैं. Entire family is writing that. They are making a lot of sacrifices for us. And their prayers are there as well. Yeah, exactly. जब मैं क्लैट दे के बाहर आई थी तो my mom was like कि तुम लोग अंदर अपना फ्यूचर लेके जाओ, हम लोग बाहर तुम्हारा वेट करते थे, प्रे करते थे तुम्हारे लिए कि सब कुछ अच्छा हो, तुम रोते हुए बाहर जाओ, हंसते बाहर To आओ. sum it up, if we are the sculpture, we are the sculptor. And जैसे ही मैं बाहर आई, I just hugged my father and said, पापा बस हो गया, अगली बार आई बस नहीं. So I think we have been connected with Ellie all times. So what role has it played? Like
I was connected with Sumit sir, and the test series and modules were really good, top notch. So yeah, that really helped me in my preparation. And like I used to talk to Sumit sir once in a while, so he used to guide me like, अगर कोई बात नहीं, अगर मॉक में स्कोर कम आ रहा है कोई बात नहीं, रिवर तुम्हारा हो जाएगा, होता रहता है मॉक्स में, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. तो या mock and material वाला चीज तो we all know and every viewer will know that LE is the best for it. Yeah, undoubtedly no one can disagree here. And the role the people have also played, like Sumit sir, as he said, he was a big guiding light to us, always with his back around us, and even Harsh sir and Siddhant sir also did a commendable job. I think I really want to thank him for all the contributions he has made. But I feel that LE in particular was a very stabilizing factor for me, because last year I had prepared for my NEET without any coaching, isolated. So that really took a toll on my mental health, and when I came here, I joined. So the constant, it gave me a schedule, कि okay, I have to come to the coaching, I'm connecting with the teachers, I'm interacting with the students. So that always stabilized me and gave me a direction, because काफी बार ऐसा होता है, especially when you're taking a drop and school वाला एक stabilizing factor नहीं है. At that time, it is very easy to get distracted. It is very easy to fall into thought patterns कि you're not happy, you're depressed, or you're not working hard. So उस time it is very helpful to come to a coaching, and LegalEdge में all the mentors really guided me very well. All the teachers were amazing, and they took my concepts in those 6 months ही सारे basics clear किए, and then took me to a level where I am today. So I'm always grateful to LE. LE wasn't a coaching, basically it was a family. Yeah, I was associated with LE during my first attempt. तो उस time सब teachers से मैं एक touch में रहता था. तो I didn't expect कि जब मैं वापस आऊँगा इस hiatus के बाद में, so कि मैं ढंग से मतलब interact कर पाऊँगा, approach कर पाऊँगा teachers को, so because I am completely cut off from everyone. I was in such a bad state. So जब मैं वापस आया तो I opted for test series. But Sumit sir, all the teachers there, Sonali ma'am, Rajiv sir, Pura ma'am, they all made me feel like part of that family, right? So like they used to guide me. They also provided me with a lot of materials which usually PhD students don't get access to. Oh, that shouldn't have been said here. And then Amit sir with GK. Yeah, he was a great person as usual. Teachers helped me a lot. I used to cry in front of them. ऐसे कि क्या कर रहा हूँ मैं, होगा नहीं होगा. So they were very helpful. और उन्हें बहुत emotionally support किया. They had to take a lot of tears. Okay, then we'll wrap up. Yeah, we'll wrap it up. All the best. All the guys. best. All the best.